Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Today we are moving further in this chapter. So before we start exercise 11.3, the last 11.4, the last exercise of your chapter. Before that we'll try this on page number 225 in your textbook. If you can say, it is given that convert the following. So 50 centimeters square to millimeter square we have to change. So first what we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter, that we are knowing that 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So if we are finding out 1 centimeter square means 1 into 1, so same way it will be 10 into 10, which comes to 100 millimeter square. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर means how much, that is what is being given in the question also. हमें सेंटीमीटर स्क्वायर to millimeter square we have to find out. So first we should know that 1 centimeter square is equal to how much millimeter square. So it is coming to 100 millimeter square. So we are having 50 centimeter square. So that will be 50 into 100, that comes to 5000 millimeter square. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So 1 centimeter square. So it will be 10 tens are 100 millimeter square. So हमको 50 centimeter square means how much millimeter square? So it comes to 5000 millimeter square. Now let us move to second one, that is 2 hectare in meter square. 2 hectare to meter square. Now hectare is again a unit for measuring only. So 1 hectare is equal to 10,000 meter square होता है. 1 hectare means 10,000 meter square. So we are having 2 hectares. So it will be 2 into 10,000, that comes to 20,000 meter square will be the answer for second one. If we go to third one, it is given that 10 meter square in centimeter square. So 10 meter square to centimeter square. So same like this we will convert. First 1 meter square is equal to how much centimeter square. So 1 meter we are knowing 100 centimeter. So if it will be 1 meter square, so it will be 100 into 100, that comes to 10,000 centimeter square. So now we know that 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. So we are having 10 meter square. So 10 meter square will be what? 10 into 10,000. So that becomes 1 lakh centimeter square. Then now fourth one, it is given that 1000 centimeter square in meter square. Now 1000 centimeter square is equal to 2 meter square we have to find out. Now here we are knowing that 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. तो अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं? That 10,000 centimeter square is equal to 1 meter square. So 1000, what is given in the question, centimeter square is equal to how much? So when we will divide, so 1000 will go up upon 10,000. So 3 zeros will cut, it will come upon 1 upon 10 meter square. So
1000 centimeter square is equal to 1 upon 10 meter square will be the answer. क्योंकि हमने यहाँ पे find out किया 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. So we can write that 10,000 centimeter square is equal to 1 meter square. So 10,000 centimeter square is equal to how much meter square? So the answer will come 1 upon 10 meter square. If you want to convert, it will come as what? नीचे 0 है, so it can be written as 0.1 meter square. Both the answers are correct. Okay, so now let us move to the last exercise, exercise 11.4. Now here onwards you have to be little bit careful, otherwise it's very simple. This you had done in fifth also, inner area, outer area, but how to find out again we will go through it. So it's exercise 11.4, question number 1. Now in this almost all the questions you have to mention the figure, otherwise you will not be able to identify that what measurement is given and where we have to consider it. So let us start with first one. Sorry. That a garden is 90 meter long and 75 meter broad. So a garden there, uska length and breadth is being given. A path for 5 meter wide is to be built outside and around it. एक rectangular क्या है garden है, उसके चारों साइड एक path बनाना है. Path means एक रास्ता बनाना है चलने के लिए. और उसकी width जो दी है that is 5 meter wide है वो, और वो कहाँ पे बनाना है? रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके बाहर. इट इज रिटन क्लियरली बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट. आउटसाइड एंड अराउंड मींस उसके बाहर और उसके आसपास. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर्स. अब देखो यहाँ इसी के लिए ये कर रहा है क्योंकि समवेयर दे विल आस्क दैट हाउ कन्वर्ट द आंसर इनटू हेक्टर्स. सो फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट लेट अस मेक वन गार्डन. Okay, so this is our garden. Its length and breadth is given 90 meter and 75 meter. ये गार्डन हो गया. अब उसके चारों साइड क्या करना है? एक पाथ बनाना है. तो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया. उसके चारों साइड क्या बनाना है? एक पाथ. और पाथ की विड्थ कितनी दी है? 5 मीटर. सो 5 मीटर, this side will be 5 meter and this side also 5 meter. अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो पाथ बनाया है उसका एरिया कितना होता है. That we have to find out. And what we have to find the area of the garden in hectares. एरिया का जो गार्डन है, गार्डन का जो एरिया है उसको हमें हेक्टर में फाइंड आउट करना है. नाउ वी आर नोइंग दैट 1 hectare is equal to 10,000 meter square. So question I hope so you understood. ये गार्डन है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. उसके चारों साइड एक पाथ बनाना है चलने के लिए. उसकी विड्थ जो दी है दैट इज 5 मीटर फ्रॉम ऑल द साइड. अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो पाथ बनाया है वो कितने एरिया में फैला हुआ है. दैट वी हैव टू फाइंड आउट. एरिया ऑफ पाथ हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ टू डू इट? अभी देखो हम इसको इनर कंसीडर करते हैं, इसको आउटर कंसीडर करते हैं. ओके, सो देन इट विल बी वेरी मच इजी. तो हमें अंदर का रेक्टेंगल का पता है मेजरमेंट, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से ही करेंगे. सो व्हाट वी विल राइट दैट इनर length is equal to how much? 90 meter. Then inner breadth is equal to how much? 75 meter. It is given in the question. Now therefore inner area is equal to length into breadth, that comes to 90 into 75. So 0, 9 5s is 45, 4, 9 7s is 63, plus 4 is 67. So this much meter square is the area of this garden.
ये गार्डन का एरिया हमें पता चल गया, इट इज 6750 मीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड आउट करना है, दैट एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया हमें क्या मिला, क्या है, दिस इज द पाथ, ये पाथ है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसकी मेजरमेंट चाहिए, बट दैट वी आर नॉट हैविंग, सो हाउ टू फाइंड आउट। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है, नाउ दिस मच, अगर इसका भी कंसीडर करोगे तो कितना आएगा, 90 90 आएगा। नाउ ये साइड से भी ये रास्ता इधर ऐड हो रहा है, दिस साइड आल्सो इट इज बीइंग एडेड, तब जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ ना। सो हम जब आउटर लेंथ हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जो पहले दिया है कितना 90, अब उसमें दोनों साइड से 5 मीटर का रोड भी उसमें अटैच होगा, सो व्हाट विल राइट 5 + 5, so 90 + 5 it comes as 100 मीटर, वो उसकी लेंथ हो गई। सेम वे आउटर ब्रेथ, तो आउटर ब्रेथ अगर इतना 75 है, सो ये 5 मीटर और ये 5 मीटर उसमें ऐड हो गए, टोटल कितना ये बाहर का हो जाएगा, so 75 + 5 + 5, so 80 + 5 is 85 मीटर। therefore हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटर एरिया is equal to what, length into breadth, that comes to 100 into 85, that comes to 8500 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास देखो ये बाहर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया भी है, अंदर का रेक्टेंगल है उसका भी एरिया है, सो हम उसमें से क्या करेंगे, आउटर माइनस इनर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू व्हाट, आउटर एरिया माइनस inner area, so outer is how much, 8500 minus 6750, so 0, 10 minus 5 is 5, 14 minus 7 is 7, and 7 minus 6 is 1, so this much meter square is the area of what, path। ये path का एरिया हमको मिल गया, that what we have to find। अब सेकेंड पार्ट जो दिया है उसमें क्या बोला है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर्स, हेक्टर में उसको फाइंड आउट करना है। So now we are knowing that 1 hectare is equal to 10,000 meter square होता है। So 1 hectare means 10,000 meter square अगर होता है, so we can write down that 1 meter square is equal to 1/10,000 hectare, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे चला गया, that 1 meter square is equal to 1/10,000 hectare। so हमको एरिया क्या मिला था गार्डन का, 6750 divided by 10,000, कितने डिजिट्स है, 0 है, 1 2 3 and 4, so 1 2 3 and 4, so our answer comes 0.6750 हेक्टर, जो हमको क्वेश्चन में पूछा था, we have to find out। so area of garden in hectare कितना हो गया, 0.6750, so this is how you have to do it। पहले क्या मेजरमेंट दिया है वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, that we have to see, directly we cannot do it, that's why I told you in each and every sum you have to draw the figure, then only it will be easy। क्या दिया था, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके चारों साइड 5 मीटर का एक पाथ बनाना था, तो वो पाथ जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, that we have to find out। तो पहले क्या किया, एरिया ऑफ गार्डन we have found 6750 मीटर स्क्वायर। अब ये बाहर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ और ब्रेथ तो चाहिए, सो दिस मच पार्ट इज 90, तो ये साइड से 5 ये साइड से 5 इसमें ऐड हो जाएगा, so that becomes 100। same way breadth में भी 5 + 5 it will be added, so it will become 85, and then we got the area, बाहर का एरिया मिल गया, then finally the area of path जो हमें फाइंड आउट करना है, that
outer area minus inner area, वो हमेशा वो ही रहेगा, outer minus inner. So just minus, you will get the answer as 1750 meter square is the area of that path. Now let us move to question number 2. Now most of the sums are of same type, but कहीं पे अंदर बनाना होगा, कहीं पे path जो होगा that we have to make outside, so that while reading the question you have to be very clear and don't forget to make the figure. Now second one, a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular path of 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. So again same type of questions. So second one you have to do it by yourself. Same way, इसमें ये नहीं फाइंड आउट करना है, वेक्टर में चेंज करने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उधर. फिर एरिया ऑफ पाथ तो क्या दिया है, रन्स आउटसाइड ही बोला है, मतलब बाहर ही होगा. सो सेम टाइप ऑफ फिगर, जस्ट द मेजरमेंट्स विल चेंज, दैट विल बी 125 and 65, और जो पाथ का जो विड्थ है दैट विल चेंज टू 3 मीटर. रेस्ट द प्रोसेस विल बी द सेम. सो उसमें भी एरिया ऑफ पाथ ही फाइंड आउट करना. मींस स्टिल हियर this much is not in question number 2. Now let us find out question number 3. In that a picture is painted on a cardboard. A cardboard में picture paint किया. In that cardboard is 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the area of the margin. अब यहाँ पे भी क्या बोला है, सेम थिंग, लेकिन बट हियर इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर. ये पिक्चर बनाया एक कार्डबोर्ड पे. सो लेट अस मेक ऑफ दिस इज अ कार्डबोर्ड, और उसकी साइज क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ये पिक्चर जहां पे बनाया वो उसका साइज है. अब बोला है कि कार्डबोर्ड के चारों साइड 1.5 सेंटीमीटर की मार्जिन बनाई गई. सो ये मार्जिन हो गई. सो ये पूरा कार्डबोर्ड है, दिस इज द होल कार्डबोर्ड. अब जो पिक्चर बना है दैट इज 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, और उस पिक्चर के चारों साइड 1.5 सेंटीमीटर की मार्जिन बना दी है. अब हमें फाइंड आउट करना है वो मार्जिन का एरिया कितना होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. द सेम प्रोसेस व्हाट वी हैड डन इन फर्स्ट एंड सेकंड, द सेम विल कम हियर आल्सो. सो व्हाट विल राइट, लेंथ ऑफ जस्ट अंदर का है. सो विल स्टार्ट विद इनर लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. Same way, inner breadth is equal to 5 centimeter, and therefore inner area. Inner area means वो picture का area होगा. So that will be L into D. So 8 into 5 that comes to 40 centimeter square. ये किसका area होगा? Of this picture only. अब मार्जिन से 1.5 सेंटीमीटर on all the 4 sides. So what you have to do, outer length कैसे होगा, 8 plus 1.5 plus 1.5 on both the side आ जाएगा 1.5 1.5. So 1.5 is 3 and 8 plus 3 it will be 11 centimeter. Now same way, outer breadth that will be equal to 5 plus 1.5 plus 1.5. So 5 plus 3 is 8 centimeter, and therefore outer area is equal to L into B, that comes to 11 into 8, 88 centimeter square. तो बाहर का मिल गया, अंदर का भी है हमारे पास. therefore area of
मार्जिन इज इक्वल टू, क्योंकि फाइंड आउट हमें यही करना है, एरिया ऑफ मार्जिन, सो इट विल बी आउटर एरिया माइनस inner area, so outer is 88 minus 40, that comes to 48 centimeter square is the area of the margin which we have to find out. Done. Now let's move to question number 5. Again it is of same type, but यहाँ पे क्या दिया है, veranda is being given. So a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of veranda. Then the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. अब एक रूम है, उसके चारों साइड एक वरांदा बनाया है. वरांदा मीन्स अ प्लेस, जैसे हम आंगन बोलते हैं ना, जैसे घर के बाहर होता है, वैसे रूम के चारों साइड एक वरांदा बनाना है. ओके, फॉर कीपिंग और फॉर वॉकिंग, और एक स्पेस वहां पे रखना है, यू कैन से. अब उसकी जो विड्थ दी है वरांदा के, दैट इज 2.25 मीटर, और रूम का जो लेंथ एंड ब्रेथ इज 5.5 मीटर एंड 4 मीटर. हमें फाइंड आउट करना है कि वो वरांदा का एरिया कितना होगा, सीन लाइक दिस. और फिर सेकंड में फाइंड आउट करना है उसको सीमेंटिंग करना है वो वरांदा पूरा विद सीमेंट. सो उसका कॉस्ट कितना होगा, दैट आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट. सो द सेम प्रोसेस. इसके बाद जैसे हम नॉर्मली एरिया और पेरीमीटर में फाइंड आउट करते थे, लाइक दैट कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीस 200. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, जो भी एरिया आएगा माइनस करके, दैट मच इज इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सब सिंपल है, सेम प्रोसेस. इसमें क्या दिया था, मार्जिन दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, पाथ दिया था. तो इसमें क्या दिया है, अगेन एक रूम दिया, उसके चारों साइड एक वरांदा बनाना है. दैट वरांदा हैज टू बी सीमेंटेड, उसको सीमेंट से करना है रेडी. सो फॉर दैट कितना कॉस्ट होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो फोर्थ वन अगेन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th one I am doing because it is given in a square shape, but the process is one and the same. उसमें भी outer and inner will come. So let us do question number 5. Now in question number 5 it is given a path 1 meter wide is built along the border and inside the square garden of side 30 meter. Find the area of the path, and again the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. तो पहले क्या दिया है, पाथ बनाना है लेकिन स्क्वायर गार्डन के अंदर. So let us make first a square garden. Then this is a square garden whose side is given as 30 meter. अब उसके अंदर एक पाथ बनाना है. So let us make a path. So this becomes the path. ये path हो गया, उसके अंदर बनाना है. See, if you are again forming कि उसके बाहर path बना दिया, then the calculation will go totally different. क्या बोला है, a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of 30 centimeter. तो ये square garden हो गया 30 centimeter. This is the path 1 meter. यहाँ पे भी measurement 1 meter, here also 1 meter. 1 मीटर का पाथ उसके चारों साइड लेकिन अंदर. ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो चीजें. एक तो वो पाथ का एरिया कितना होता है, दैट, और दूसरा द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन. ये जो पोर्शन बाकी रह जाता है वो गार्डन का, उसमें क्या करना है, ग्रास को
ग्रो करने के लिए प्लांटिंग द ग्रास उसमें 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपीज चार्ज लगा रहे हैं। तो ये पूरा स्क्वायर गार्डन, उसके चारों साइड, अंदर की चारों साइड क्या बनाना है, पाथ बनाना है 1 मीटर, और ये जो एरिया बच जाता है उसमें ग्रास को प्लांट करना है, और 1 मीटर स्क्वायर ग्रास को प्लांट करने का चार्ज रुपीज 40 है। तो ये पूरे एरिया में प्लांट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, दैट वी हैव टू find out. So as it is in a square shape and square garden, so what we will write, outer side, क्योंकि बाहर का दिया है that's why we'll start with outer, यहाँ पे अंदर का दिया था that's why we used to start with inner. So now outer side is 30 meter and therefore outer area is equal to side into side, as it is square, so 30 into 30, that comes to 900 meter square. ये पूरे square garden का एरिया हमको मिल गया। Now we have to find out the inner side. अब देखो अंदर का मेजरमेंट मींस ये पूरा 30 है, तो ये 1 मीटर का पाथ बनेगा, तो मेजरमेंट उतना कम हो जाएगा ना। जैसे बाहर का बनता था तो कैसे प्लस हो रहा था, तो जब हम आउटर से स्टार्ट करते हैं तो जब इनर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है। हियर वी हैव टू प्लस, कब, जब अंदर का दिया और बाहर का हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बाहर का ऑलरेडी मेजरमेंट दे दिया, स्क्वायर गार्डन के अंदर रास्ता बना रहा है तो मेजरमेंट उतना कम होगा, दोनों साइड से 1 मीटर, सो इट विल बी 30 minus 1 that comes to 28 मीटर। वो अंदर के स्क्वायर का साइड हो गया, सो देयरफॉर इनर एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू side, and that will be 28 into 28. You have to find out, and you know 28 into 28 कितना होगा। I had already made you to write down the squares ना, so 28, 8 8s are 64, 6 8 2s are 16 plus 6 is 22, 16 4 8 and 784 will come, so 784 meter square is the area of the inner square. अब क्या फाइंड आउट करना है, therefore area of path. Okay, so area of path is equal to how much, what, outer area minus inner area, that is 900 minus 784, so that will be 10 minus 4 is 6, 9 minus 8 is 1, 8 minus 7 is 1। ये किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ पाथ, that is the first part of the question। Now second part is given that cost of planting grass in the remaining portion of the garden। तो remaining portion of the garden कितना हमको find out किया हमने, 784 meter square। तो second part you have to do it because as it is given cost for planting the grass, so what statement you will write, cost of planting grass, planting 1 meter square grass, or you can say planting grass in 1 meter square is equal to rupees 40. So cost of planting grass in 784 meter square, you will get 784 into 40. You have to do it and find out the answer. So that was your question number 5. So in this video students, this much only. In the next video we will move further in this exercise. So till then, thank you and take care.